Hello and welcome students to our lecture on rectilinear figures. So we are discussing about problems on parallelograms, rhombus, square, rectangle and similar quadrilaterals. In this sequence we are today discussing certain more problems. So the first problem is before us. In this problem we are given ABCD is a parallelogram as you can see in the figure, and AP and CQ are the perpendiculars from the vertices A and C respectively on the diagonal BD. तो ये perpendicular भी आपको दे दिया गया और parallelogram दे दिया गया. Now the first thing which we have to show is APB is congruent to triangle CQD and the second one is AP is equal to CQ. So let us see how to proceed. तो सबसे पहले हमने क्या करना है? We have to take the triangle ABP and triangle CDQ. So these are the triangles you can see here. In this triangle you can very easily see what parts we need to take to prove that they are congruent. So first of all we will take AB is equal to CD because they are opposite sides of the parallelogram, and then you can take angle APB is equal to angle DQC, they are right angles, and then we have two more angles. So these angles are equal because they are alternate interior angles in the parallelogram. So overall what you got is side, then next two angles. So AAS rule, angle side rule will give you that the triangle ABP is congruent to triangle CDQ. Now it's very easy. Just use CPCT. So by CPCT what we will get is AP is equal to CQ. So that is the second part. Moving on to the next problem. In this one we have ABCD is a parallelogram. As you can see there are 2 points E and F on the diagonal AC. तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये कैसे रखे गए हैं? ये इस तरीके से रखा गया है कि ए ई और सी एफ इक्वल हो जाएगा एज यू कैन सी विद द मार्क्ड लाइंस. अब हमें शो करना है कि जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है बी एफ डी ई ये एक पैरेललोग्राम होगा. तो हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं? देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करना है और जो ए ई इक्वल्स टू सी एफ दिया गया है इसको यूज करना है. तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? कंसीडर ट्राइंगल सी एफ बी एंड ट्राइंगल ए ई डी. सो वेयर आर द ट्राइंगल्स? सो दीज आर द टू ट्राइंगल्स ए ई डी and triangle CFB. So what we need to see here? So in these two triangles, you can see that CF is equal to AE, okay, and that is given. And then DAE is equal to BCF. So what you can see here is this is DAE and this is BCF. So these two angles are alternate interior angles, and AD is equal to CB. So AD and CB they are equal because they are opposite sides of the parallelogram. So overall what you get is by SAS rule the triangles are congruent. By CPCT you get BF is equal to DE. So what is BF? BF is this side. So this side is same as this opposite side. Now we have other two triangles, and in the same manner what we can see here is that these two triangles will also be congruent by SAS rule. CFD is congruent to triangle AEB. Now again using CPCT we get BE is equal to DF. So now when you combine these two you have a new quadrilateral. और अगर आप देखो तो इस quadrilateral में आपके पास ये वाला जो साइड है ये वाला साइड आपका इक्वल आ रहा है इस साइड के, और दो ऑपोजिट साइड भी इक्वल आ रहे हैं. So all the pairs are equal in quadrilateral BEDF. The pair of opposite sides are equal, hence it is a parallelogram. So what we have used is two pair of triangles and then we have proved that they are congruent, और congruent होने के बाद आपने CPCT लगा दिया and at the end you got BEDF is a parallelogram. That's how to prove this. Now moving on to the next one. In this one we are given parallelogram ABCD and then we have angle bisectors. So it is interesting that all these lines, these four lines are angle bisectors. So हमने क्या लेना है? दो ट्राइंगल लेने हैं BQC and ASD. So these are the two triangles which we need to take. But before proceeding further आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसमें होल्ड करेगी, यानी कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. तो आपका एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है. अब जब बाइसेक्टर की बात आती है तो इसका मतलब क्या हो गया? ए आपका दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया और सी भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. एंड लेट अस लेबल देम एज एक्स. ठीक है. अब इसी तरह से आप बात करो तो बी और डी भी इक्वल थे एंड लेट अस लेबल देम एज वाई. So if you use the angle sum property of the quadrilateral you will get x plus x plus x plus x plus y plus y plus y plus y equals to 360 डिग्री. और यहां से आपको क्या मिल जाएगा? इधर से आपको मिलेगा x plus y की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री. ये आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल से मिल गया. अब आप क्या करोगे? आपने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना है ट्राइंगल्स में. ये जो दो ट्राइंगल्स आपके पास दिए गए हैं
इनमें आपने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया तो आपको पहला रिलेशन क्या मिलेगा, एंगल बी क्यू सी प्लस एक्स प्लस वाई इज 180 एंड एंगल ए एस डी प्लस एक्स प्लस वाई इज 180 डिग्री। अब एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपको पता है, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया एंगल बी क्यू सी एंड एंगल ए एस डी, यानी कि दो ट्राइंगल्स में आपको राइट एंगल मिल जाएगा। कहां पर राइट एंगल बन रहा होगा, अगर आप देखोगे तो आपको एंगल डी एस ए एंड एंगल सी क्यू बी, दे आर राइट एंगल। सो दिस इज अ राइट एंगल एंड दिस इज अ राइट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट से आपका ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। सो बी क्यू सी और ए एस डी इक्वल हो गया और 90 हो गया। देन प्रोसीडिंग फर्दर हमने दो और ट्राइंगल ले लिए, जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास ट्राइंगल क्या आ जाएगा, ट्राइंगल आ जाएगा डी आर सी एंड ट्राइंगल ए पी बी। इसमें भी आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डी आर सी दैट मींस दिस एंगल एंड ए पी बी दैट इज दिस एंगल। सो नाउ दीज फोर एंगल्स आर ऑल ऑफ 90 डिग्री। तो अब हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल आ गया जिसमें आप देख रहे हो चारों एंगल कितने हैं, चारों एंगल इसके 90 डिग्री हो गए। अब चारों एंगल 90 डिग्री है तो इंटरेस्टिंग बात क्या निकल के आया, पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब किसी क्वाड्रिलेटरल में पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम, हेंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम। सो वेरी इजी टू प्रूव इट। Coming on to the next problem, we have a kite. Okay, a kite is something in which two adjacent sides are equal, pair of adjacent sides are equal. So here BC is equal to CD and AD is equal to AB. What we have to show is that AC is the bisector of angle A and angle C. That is the first part. So we will take two triangles ADC and triangle ABC. These are the two triangles. And as you can see that we can follow SSS rule because this CD is equal to CB given, AB is equal to AD, it is also given. एंड AC इज द कॉमन साइड। तो दो ट्राइंगल्स में आपको तीन साइड कॉमन मिल गए, तीन साइड इक्वल मिल गए रिस्पेक्टिवली। सो बाय SSS रूल द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर आप CPCT लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएंगे एंगल्स। जैसे कि आपने देखा एंगल C के करस्पॉन्डिंग दो पार्ट्स बने और एंगल A के भी दो पार्ट्स बन गए। नाउ दीज टू पार्ट्स आर इक्वल। DCA जो है वो आपका BCA के इक्वल हो जाएगा और BAC आपका DAC के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। सो नेक्स्ट हम क्या देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमने देखा कि दो एंगल इक्वल मिल गए आपको और आपने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या शो करना है, सेकंड पार्ट जो हमारा है वो हमें शो करना है AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपने एंगल A एंगल C का बाइसेक्टर तो दिखा दिया। अब अगर आप देखो तो दो ट्राइंगल हम ले लेंगे DOC एंड ट्राइंगल BOC। सो वेयर आर दीज ट्राइंगल्स, DOC एंड BOC को लोकेट कर लिया आपने। अब आप देखोगे इसमें क्या है, CD और BC इक्वल है बिकॉज दे वर गिवन। एंगल DCO और एंगल BCO इक्वल हो गया CPCT से और CO is the common side. So what you will get is by SAS rule DOC triangle is congruent to triangle BOC. अब ये पार्ट आपको क्या दिखा रहा है, ये पार्ट आपको दिखा रहा है कि यहां पर अगेन by CPCT DOC is equal to BOC and DO is equal to BO. दो पार्ट आपके पास आ जाएंगे। This part DO is equal to BO and these two angles are also equal. अब लीनियर पेयर लगा दोगे आप इसमें, लीनियर पेयर लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इक्वल एंगल्स हैं और लीनियर पेयर बना रहे हैं, देन दे आर राइट एंगल्स। सो एट द एंड हमें क्या मिलेगा, DOC प्लस BOC की वैल्यू 180 डिग्री है, दे विल फॉर्म लीनियर पेयर एंड ऑल्सो दे आर इक्वल। देयरफॉर ये जो आपका एंगल है 90 डिग्री है और साथ ही साथ O is the midpoint of BD. Therefore AC is perpendicular and it is also a bisector of BD. That is how to prove this problem. Coming on to the next one. This is again a very interesting problem and here we have a trapezium. So ABCD एक trapezium दिया गया where you can see DC is parallel to AB. Now AOB angle is 126 degree and you can see angle PDC and angle QCD are 52 degree each. What we have to find is the values of X and Y which are given in the problem. So first of all we will see that AB is parallel to DC as it is a trapezium. So therefore angle DAB and angle PDC which are in red color, they must be equal because they are corresponding angles. Now same concept can be applied to other pair of angle also, DCQ and angle ABC. You can see they both again will be 52 degree. These are the angles, they are corresponding angles. So we have ABCD is an isosceles trapezium. Isosceles trapezium students आपको याद होगा, isosceles trapezium is a trapezium where non-parallel sides are equal. तो AD और BC यहाँ पर equal हो गया. Now what we will do here is we can see that there is one triangle ABC and there is another triangle that is ADB. अब ये दो ट्राइंगल को लेकर के अगर हम बात करें तो हमारे पास एंगल A एंगल B इक्वल आ रहा है because both are 52 डिग्री. Then AD is equal to BC. Isosceles trapezium के non parallel side इक्वल होते हैं. Then AB is equal to BA because it is a common side. So what you get is by SAS rule the two triangles are congruent.
अब ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आप सीपीसीटी लगा दोगे, सीपीसीटी लगाओगे देन यू विल गेट एंगल ABD. So you can see which is angle ABD. Angle ABD is an angle inside triangle AOB. So यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास दो एंगल इक्वल आ गए, ABD एंड BAC. अब हम चलते हैं ट्राइंगल AOB की तरफ, जिसमें हमें दो एंगल इक्वल मिल गए हैं, यानी कि ये जो ट्राइंगल है ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया. अब आप इसमें क्या करोगे, एक एंगल 126 डिग्री दिया गया है और आपके दो एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो आप क्या लगाओगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे. एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आपने क्या निकाला, आपने निकाला एंगल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 डिग्री ईच. अब आपको x निकालना है, तो आप जानते हो कि पूरा एंगल कितना है, 52 डिग्री. देन x निकालने के लिए क्या करोगे, 52 में से 27 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 25 डिग्री. दैट इज द वैल्यू ऑफ x. नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, सिमिलरली वी हैव 180 माइनस 52 माइनस 27. तो यहां पर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया है इन द ट्राइंगल ABC. ओके, so this is how we got the values of x and y. Moving on to the next problem, we have given a parallelogram, and in that parallelogram we are given that one of the two adjacent angles is 2/3 of the other. अगर आपके पास एक एंगल x है तो दूसरा एंगल आपका 2x/3 हो रहा है, ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है. तो एडजेसेंट एंगल आप जानते हो कि जो कंसेक्यूटिव वर्टिसेस पे बन रहे हो. Then what need to find is the angles of the parallelogram. It's very easy problem. अब आप जानते हो कि भाई ये जो एंगल्स हैं, because it is a parallelogram, so they will form a co-interior pair. They are supplementary angles, so their sum must be 180 degree. On solving, you get x is 108 degree. But what we need to find is the sum, is the individual angles of the parallelogram. So we will see that opposite angles are equal. तो opposite angle equal होते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपका जो x के वैल्यू 108 है, तो उसके ऑपोजिट वाला एंगल भी 108 हो जाएगा. एंड then 2x/3 will become 72 and the opposite angle will also be 70. Moving on to the next problem, that is our last problem and it is going to be an interesting one. We are given a rectangle ABCD and in that rectangle we have angle ABD equals to 50 degree and we have to find angle DPC in the red color. Now students, it is interesting to first note a property of the rectangle. तो रेक्टेंगल में एक प्रॉपर्टी क्या होता है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर. तो बाइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम में भी होती है, बट यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा आगे आ जाता है, वो है इक्वलिटी. द डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ. तो अब हम इसके लिए देखते हैं कि जब डायगोनल इक्वल है लेंथ में, तो आप क्या देख रहे हो, PC इज इक्वल टू PA, ऑल्सो PD इज इक्वल टू PB. बट सिंस बोथ डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, सो देयरफॉर देयर हाफ्स आर इक्वल. सो वी हैव PA इज इक्वल टू PB और इससे आपको क्या मिलेगा, द ट्राइंगल PAB इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड देयरफॉर एंगल PAB कम्स आउट टू बी 50 डिग्री. अब क्या करना है हमें, अब हमें यूज कर लेना है ट्राइंगल PAB में एंगल सम प्रॉपर्टी. सो एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका एंगल APB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 50 दैट इज 80 डिग्रीज. अब ये एंगल, और अगर आप रिक्वायर्ड एंगल को देखोगे तो DPC क्या हो रहा है, DPC इज इक्वल टू APB बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो दैट इज द रिक्वायर्ड answer. So in the description you will get a link to the assignment which are similar problems, और उन problems को आप solve करेंगे, then you will send your solutions, we will send your doubts also, your queries. इन सारे solutions और doubts को हम जो problems होंगे उनको discuss करेंगे in the upcoming live session. Thanks to all of you students for watching this lecture. In the future we will come with more interesting lectures.